we'll start with basics. ठीक है, अभी मैं आपको प्रण ले चुकी हूँ that I'm going to give you some valuable tips. So सबसे पहले मैंने कल भी पूरी अपनी इंट्रोडक्शन लिखी थी मैम. Okay, मतलब that's very good. इंट्रोडक्शन नहीं मैम, पूरा देख कि मैंने कैसे स्पेंड किया. Actually make this your habit. If you start writing whatever like how did you spend your day or whatever the stuff, if you start writing, you will see drastic change in your learning, also in your speaking, in your writing. Okay, and now I will be sticking to this language only, and I want you to speak in this language only. We will not use Hindi. Okay, सो टेक दैट प्रतिज्ञा कि चाहे कुछ हो जाए, कम व्हाट में. अब इसको देखो, आई एम गोइंग टू गिव यू 3 फ्रेजेस. चाहे जो हो जाए ना, नो मैटर व्हाट, लिख लो, राइट इट डाउन. नो मैटर व्हाट, कम व्हाट में, ये भी फ्रेज है. कम फिर व्हाट और MAY में. लिख लिया? डन. कम व्हाट में. यस मैम. एंड थर्ड इज कम रेन और शाइन. कम रेन और शाइन. ठीक है, सो कम रेन और शाइन, कम व्हाट में, we are going to stick to English only and we are not going to use Hindi. I have that liberty. I can use Hindi to make you understand, but you have to speak in English only. Okay? Yes. So, okay. First, you tell me whatever you have written. How did you spend your day, or what was the topic? Happiness. No ma'am. Topic is book. The book or books. Okay ma'am. Ma'am, before I start explanation of book, ma'am, I tell you I am also an avid reader. Okay. Normally some people reduce stress through the listening music, but I also might reduce stress through reading the book. Okay, I also reduce stress by reading, or when I read, or reading, ऐसे लिखो, reading helps me to reduce my stress. अब इसमें भी I'll give you some phrases. ठीक है, reading soothes my soul. soothe मतलब शांति देती है ना. reading soothes my soul, or you can say reading floats my boat. Reading floats my boat. ठीक है, all these phrases just mean that reading makes me happy, it gives me happiness, it gives me peace mind, that calmness. Okay. Continue. Ma'am, I cannot imagine my life without books, and also I can't imagine without books this world. Imagine. Ma'am, books contain all the information we need to remember and learn. Right, we can say books are our buddies, they are our best friends. Right, actually books are Yes, our ma'am. true friends. They live with us permanently, and they demand nothing. Yes, They ma'am. just give us knowledge and all kind of support, but they never demand anything from us. Yes, ma'am. Hmm. And reading books improves concentration and reading skills. Yes, reading books improve concentration. It improves our logical skills also, reasoning also, and imagination also. Reading books makes us more imaginative, more creative, because when we go through the characters we read about, of course we start thinking about them. Let's say you are reading a novel, so if there is any character you feel like, okay, you can resonate with that character. Resonate means you can relate your life with that character, and we start thinking, right? We start having assumption, okay, if I were that character, so I would have done this, or kind of stuff. So reading makes us creative also, creative, imaginative, or innovative also. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. So books are also a good entertainment. Books are
Books source are of also source of good source source of of entertainment. Yes, entertainment, ma'am. हाँ. और books entertains us, books entertain us, Yes, है ना? अगर books है तो books entertain us, right? entertains. Hmm. It improves our vocabulary. Yes, it enrich. अगर books बोल रहे हो तो enrich, ठीक है, प्लूरल में ले रहे हो तो enrich, अगर सिंगुलर है तो enrich. So books लेते हैं, books enrich our vocabulary और दे बिल्ड आर वोकेबलरी, ठीक है. इम्प्रूव की जगह हम एनरिच बोल रहे हैं, बिल्ड बोल रहे हैं, बिकॉज वी नीड टू लर्न न्यू वर्ड्स. और दे इन्हांस आर वोकेबलरी, सारे का Okay. एक मतलब. नेक्स्ट, एनीथिंग? Books are a unique way of storing and passing knowledge next to generation. Yes, right. We transfer, actually. We transfer knowledge generation to generation. This is Yes, the ma'am. best form of exchanging knowledge, I would say, right? We exchange Yes, ma'am. knowledge from one generation to Yes, ma'am. another one, right? Yes. So we transfer. We can say this is the best way to transfer knowledge from one generation to the other, right? Okay, so good try, and just try to use enrich instead of improve vocabulary. You can say enrich, na? Every time if you, anytime if you want to say I want to learn English, I want to speak English in a good way. Yes, So ma'am. you can just say that I want to polish my communication skills. Yeah? I want to polish Yes, ma'am. my I want to polish communication my skills. communication skills. Communication. I want to groom myself. Communication. I want to groom myself. Groom. 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 Groom, right? We can say that Kaka grooms people, right? Because she runs her salon, so she grooms people's personalities, people's appearance. वो लोगों की appearance को Yes, ma'am. groom करती है. And you want to groom your personality from within. आप अंदर से अपने आप को और खूबसूरत बनाना चाहते हो, right? You want to groom your communication skills. ओके, तो ग्रूम का मतलब देखो, ग्रूम जो है वी कैन यूज इट फॉर पीपल ऑल्सो, फॉर थिंग्स लाइक आई ऑलवेज से दैट आई लव ग्रूमिंग माई होम. मुझे अपना घर को सजाना, ग्रूम किसी भी चीज को Yes, ma'am. निखारना. Okay, so we can groom ourselves also, we can groom other people, and we can groom things also. Okay, so it's a nice word. Try to use this word in your daily vocabulary. Also, if I say I am going to ask you similar type of question, so you have to be very frequent while answering me. Let's say, hi Akshu, how are you? I'm pretty good. And how about you? Okay, nice. How are you doing? I'm doing all right. ओके, सो देखो, सो मैनी अदर वेज है ना. किसी ने पूछा कि हाउ आर यू, हाय अक्षु, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, थैंक्स फॉर आस्किंग, हाउ अबाउट यू? ठीक है, तो इट शुड बी वेरी नेचुरल. ऐसा ना लगे Yes, that ma'am. we are thinking first and then we are translating or we are speaking, na. I'm pretty Okay. good, thanks for asking, how about you? If someone asks you how are you doing, na, I'm doing all right, as you mentioned, all right, I'm doing all right, I'm doing great, thanks for asking, how are you doing? अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, so focus should be on you, है ना. I'm doing all right, thanks for asking, how are you doing? Yes, ma'am. Okay. Tone. Language is all about expressing yourself, and expression should be very up and down. एक उस सिचुएशन में नहीं, it should not be flat, है ना. जैसे हम ऐसे, हाँ, I am good, thanks for asking, how about you? तो it Yes, sounds ma'am. like we are robots or we are zombies, right? So there are Yes, ma'am. certain other words you can say. I am amazing, I am awesome, I am wonderful, I am fantastic, right? But better way to say, I am fresh as a daisy. I am fresh as a daisy, or you can say I am fresh as a flower. And fresh Okay, as a as a flower. flower. Just let's say, hi Akshu, how are you? Yes, I am fresh as a flower. Thanks for asking. How about you? Or you can say, I am fit as a fiddle. Fit Yes, ma'am. as a fiddle. ठीक है, एकदम healthy fit. Or you can say, I am cool as a cucumber. Yes, ma'am. है ना? As cool as a cucumber. And I am right as rain. I am right as rain.
Right as rain जो होता है, this specifically tells that you are healthy. Maybe you were under the weather for some time, you were not doing well. So let's say I am meeting you after a couple of days and I am asking you, okay, so I am asking about your health. So you can say now, ma'am, I am right as rain. मतलब अभी मैं एकदम fit and fine हूँ. Okay. In your family, if someone is doing unwell, तो जैसे मम्मा को मे बी जुकाम था, तो मैंने पूछा ओके हाउ शी डूइंग, या मैम नाउ शी इज राइट एज रेन. So these phrases are not only to use for ourselves only, we can use to tell other people's state of mind or state of health also. Okay. हम दूसरों के लिए बता सकते हैं. ओके, मैंने पूछा हाउ स्मृति, या मैम शी इज एज कूल एज क्यूकम्बर. इस तरह से ना. हाउ इज काका, शी इज फ्रेश एज अ फ्लावर. ओके. सो वी, हाँ, सो प्रैक्टिस. और जब बोलना है, डोंट गेट स्टक, बिकॉज व्हेन वी ग्रीट समवन, जब हम इस तरह से ग्रीट करते हैं ना, वी नीड टू बी वेरी फ्रीक्वेंट. अगर ऐसे बोलना शी इज एज कूल एज, फिर तो मजा गया, है ना. तो Yes, इट ma'am. शुड बी, ये जो ईडियम है, फ्रेजेस हैं, दे शुड बी इन रिदम. बाकी आगे पीछे अटको. बट जब ये बोलना है ना, शी इज एज कूल एज क्यूकम्बर, तो ये ऐसे आना चाहिए. अगर बीच में अटके तो फिर मज़ा नहीं आता सुनने का, फिर तो ऐसे लगता है कि नहीं, अभी प्रैक्टिस चल रही है बोलने की. तो कल से नो फाइन, नो गुड, नो, यू हैव टू Okay, यूज ma'am. दीज थिंग्स. एंड एडिशनल वन मोर वेरी गुड फ्रेज, मेरी पर्सनल फेवरेट, किसी ने, जैसे मैं पूछती हूँ कि हाउज एवरीथिंग, है ना. जैसे अभी हम आज एक्चुअली परसों मिले थे, बट हम बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो मैं पूछूंगी, जैसे मैंने सारा पूछा, ओके टेल मी हाउ आर यू, हाउ स्मृति, एंड हाउ वाज योर एग्जाम, टेल मी हाउज एवरीथिंग. ठीक है, रेंडमली. सो एवरीथिंग इज हंकी डोरी. एकदम एडवांस फ्रेज है, हंकी डोरी, HUNKY ठीक है, हंकी डोरी. Okay, ma'am. इसका हंकी डोरी मतलब सब सही है, सब अच्छा है. एवरीथिंग इज हंकी डोरी. ठीक है. अगर किसी ने पूछा कैसी चली जिंदगी, कैसी चली, या एवरीथिंग इज हंकी डोरी, तो इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज करना. ये नहीं बोलेगा एवरीथिंग इज हंकी डोरी. Everything is okay. हंकी डोरी ना. तो प्रैक्टिस करनी है बिफोर यूजिंग दीज एक्सप्रेशंस. मेक श्योर यू हैव प्रैक्टिस्ड इनफ. ठीक है, प्रैक्टिस करके ना, मतलब अटकना नहीं है इनमें. सो दैट्स माय पॉइंट. और समटाइम्स एवरी टाइम वी आर नॉट इन अ वेरी गुड मूड. हम हमेशा ही अच्छे मूड में नहीं होते. कई बार हमारी तबीयत खराब होती है, या कई बार हमारा मन अच्छा नहीं होता है, कई बार दिन अच्छा नहीं होता. जैसे मैं पूछती, अक्सर मेरा क्वेश्चन होता है हाउ इज योर डे गोइंग ऑन, और हाउ वाज योर डे. तो अच्छा तो हम बोलते हैं ना, इट वाज नाइस, इट वाज अमेजिंग, इट वाज प्रीटी वेल, राइट, एवरीथिंग, इट वाज यूजुअल, ये भी बोलते हैं कि नॉर्मल था. बट अगर बुरा था तो इट वाज अ बमर, BUMMER, बमर, इट वाज अ बमर. मतलब बेकार, ऐसे ही था. और एक बड़ी अच्छी फ्रेज है, इट वॉज अ राइड, इसको लिख लो, राइट इट डाउन. इट वॉज अ राइड इन अ स्ट्रगलिंग बस. इन अ स्ट्रगलिंग बस, बड़ी भरी बस में जब हम धक्के मुक्के खा के जाते हैं, तो ऐसे ना, जैसे मैंने पूछा ओके अक्षु हाउ वाज योर डे, डोंट आस्क मैम, इट वॉज अ राइड इन अ स्ट्रगलिंग बस ना. और हम बोलते इट वॉज हैक्टिक ना. जैसे मैम इट वॉज Yes, ma'am. हैक्टिक, मैं पूछूंगी व्हाई, व्हाट हैपेंड, मैम इट वॉज अ राइड इन अ स्ट्रगलिंग बस, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, आई एम नॉट एबल टू मैनेज थिंग्स टुडे. ठीक है, ऐसे करके. सो इट शुड बी इन फ्लो. आई वॉन्ट यू टू, बिकॉज सी एवरी डे आई एम गोइंग टू आस्क यू सेम क्वेश्चन. मैं ऐसी सिचुएशन होंगी, जस्ट इमेजिन मैं आपकी फ्रेंड हूँ, मैं आपके साथ कॉन्वर्जेशन कर रही हूँ, और आपको ये चीज़ें, ठीक है, आज का दिन अच्छा नहीं है, तो मैं पूछूंगी हाँ अक्षु व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू सो अपसेट, देन यू हैव टू से अरे यार आज का दिन इट वाज सो हेक्टिक, it was like a ride in a struggling bus. I am trying to catch things, I am trying to handle things, but I am running out of time. तो ऐसे ऐसे फ्लो में आनी चाहिए. So this is the only way. Okay, because we have done sufficient grammar. अभी grammar मैंने इतना नहीं करवाना आपको. It's just about communication and spoken. Done? Yes, ma'am. So how is the feeling? Too much good, ma'am. Okay. Fine, fine. So